So now we are going to discuss about electro electromagnetic induction, right? So what happens in this this is we are having a coil, right? Like this. This is a coil, and this is we have galvanometer, right? This is we have galvanometer. Galvanometer is used for नहीं जा रहा है आया हेलो अभी ठीक है तो so you are using of Jio or Airtel? No, Wi-Fi of what? Jio or this Airtel? Acha, very great you are, man. Anyway, this is galvanometer, and this what you closed? You close your camera. So you close your camera also so that it will be more convenient for you, right? So this is a magnet, This is a magnet, North Pole and South Pole, fine. And this is a coil. This is galvanometer. Galvanometer is used for measuring small fluctuations. Galvanometer galvanometer used to measure small fluctuations, right? So what happens if this is a magnet, so it will having a magnetic field around it. Magnetic field is represented by magnetic field lines, right? So these are magnetic field lines around the coil, right? So what happens, what Faraday has seen, when it is moving, when this magnet is moving towards the coil, towards the coil, towards or away from coil, away, then there is fluctuation in galvanometer, fluctuation in galvanometer, fluctuation in galvanometer, right? So when it is moving towards or away the coil, then there is fluctuation in galvanometer. But when stationary, but when stationary, stationary, then no fluctuation. Then no fluctuation. FULC fluctuation.
then no fluctuation. Fine. So this is his observation. And in this, what happens? Either magnet is moving or coil is moving. That doesn't matter. That does not matter. Fluctuation is there, right? So this was the initial thought. After that, so we have one point here, that there is a term that is known as magnetic flux. Magnetic magnetic flux. What is it? Magnetic flux is magnetic field lines, magnetic field lines passing passing per unit area, per unit area. That is known as magnetic flux, right? Magnetic flux is magnetic field lines passing per unit area. That is known as magnetic flux. So, when you just see here, this is the magnet. So, when you are bringing close to it, then magnetic field lines are increasing, right? And when it is going away, then it is magnetic field line will decrease. So, what happens? And so, induced current, sorry, and one more term is, that is, uh, yeah, related to that, rate of change of magnetic flux. Rate of change, rate of change of magnetic flux. Magnetic flux, right? So one thing is magnetic flux, which is magnetic field lines passing per unit area. Rate of change of magnetic flux means number of magnetic field lines passing per unit area per second. So there must be change. There must be change in magnetic field lines passing per unit area per second. That is known as, इसको हम use magnetic flux के लिए we are using phi, right? And rate of change of magnetic flux के लिए we will use phi by t, right? This phi by t is responsible for generation of induced rate of change of magnetic flux is number of magnetic field lines passing per unit area per second. Magnetic flux is number of magnetic field lines passing per unit area, and जब हम we attach it with time, yes, then it is number of magnetic field lines passing per unit area per second is known as rate of change of magnetic flux, and this is responsible for generation of induced EMF, induced EMF, which leads to induced current, right? Phi upon T, induced current. It, yeah, T is time. Rate of change of number of magnetic field lines passing per unit area per second. That is rate of change of magnetic flux. And it generates induced EMF, and which leads to induced current. Right? So either we are moving this magnet towards the coil or away from the coil, there are change in magnetic field lines, right? Which leads to generation of induced this rate of change of magnetic flux, and that causes induced EMF, and therefore there is fluctuation in the galvanometer. So this is the concept. Actually, suppose in this case either magnet is moving or
coil is moving, right? Out of these two, any one is moving. There will be fluctuation in the galvanometer. There will be induced current in the circuit. It does not matter only कि I am saying कि magnet is moving, so only on moving of magnet. No, on moving of coil also this happens. Getting my point? Okay. One thing is that yes, अभी क्या है कि इसमें एक चीज और है कि जैसे ये मैग्नेट when this magnet is moving, suppose magnet is moving towards this is the north pole, and when magnet is moving towards the coil, so there generates north pole also. So this coil, this coil opposes the motion of this magnet towards the coil, and it send it away from the coil, right? When this magnet is moving towards the coil, then towards the coil is north pole, so north pole will also generates on the close end to the magnet, and it opposes the motion of magnet towards the coil, right? And if you bring this coil, sorry, if you bring this magnet away from the coil, then here is south pole, and it attracts the coil towards itself, right? So this it is opposing. There is here, here in coil generation of poles, north pole and south pole, depending upon the movement of the magnet. If magnet is moving towards the coil, then there is north pole, and it opposed towards the towards movement. And when it is this magnet is going away from the coil, then it is opposing the motion of magnet and generates south pole and attract this magnet towards it. This is known as Lenz law. Lenz Lenz law. It causes it this causes this opposes the cause of generation of EMF. ये क्या कर रहा है? कॉज ऑफ जनरेशन ऑफ ईएमएफ को अपोज कर रहा है. मैग्नेट जब टुवर्ड्स द कॉइल आ रहा है, तो ये उसको अपोज कर रहा है बाय रिपल्शन, एंड व्हेन इट इज गोइंग अवे, देन इट इज अट्रैक्टिंग इट टुवर्ड्स इटसेल्फ. So that is Lenz law says that this coil opposes, yeah, magnet opposes the cause of in the generation of EMF. Getting? One more thing. Should I rub this? Okay. I'm going to rub this. Okay. So, there is a magnet. There is a magnet, right? This is North Pole. This is South Pole, right? Up. If so, when a coil is moving, this is a coil in the magnetic field, right? These are the slip rings. These are carbon bushes, right? And this is, we have
this is the bulb, consumption point. And sorry, there is a key also in the circuit. This is. So what happens? Generator I am telling, but you do not require to understand the generator. Just the way to express you more about electro induced current, right? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को ज्यादा अच्छे से बताने के लिए मैं इसको बना रहा हूं, आपके सिलेबस में इस बार ये नहीं है जनरेटर भी, ठीक है। सो अभी क्या होता है कि जब आप इसको यहाँ पे, अच्छा है तो चलो ये जनरेटर है, ठीक है, जनरेटर में यही कंसेप्ट होता है। तो अभी क्या है कि यहाँ, हाँ, कोई बात नहीं, सुन लो, छोड़ देना जो ना है, ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना ये चाह रहा हूं कि जैसे यहाँ पे आप मान लो विंड कराई आपने, यहाँ पे वाटरफॉल कराया, ठीक है ना, वाटरफॉल हुआ, वाटर और विंड, ठीक है, विंड। तो ये जो कॉयल है ये रोटेट करेगा, है ना। ये तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वो मैग्नेटिक फील्ड होगी ऑलवेज नॉर्थ टू साउथ पोल, लाइक दिस, नॉर्थ टू साउथ इट इज, राइट। अभी क्या है, जैसे ये कॉयल है, ये मेरा हाथ है, ऐसे कॉयल है मान लो, तो ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, ठीक है। तो हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पासिंग थ्रू इट, जब मेरा हाथ इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो हाउ मेनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू विद माय हैंड? हाँ 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 हाँ, पैरेलल टू मैग, तो हाउ मेनी फील्ड लाइंस विल पास? नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास। जब पैरेलल होगा तो नो मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास, इज इट? जैसे पैरेलल हुआ तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके पास नहीं होगी इससे, है ना। अब आप इसको धीमे धीमे, अब यहाँ पे विंड का, अब जब विंड का फोर्स लगा तो ये रोटेट करना चालू किया। अब व्हेन इट स्टार्ट रोटेटिंग तो क्या होता है, धीमे धीमे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ना चालू करेंगी, है ना, जैसे जैसे बढ़ती जा रही हैं। अब ये जब एकदम परपेंडिकुलर हो जाएगा तो क्या होगा, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास थ्रू इट, राइट। सो फ्रॉम जीरो इट कम्स टू मैक्सिमम, and again it goes to parallel, then again zero, then again it will rotate and it comes to maximum, right. So in one cycle there are two conditions when magnetic field lines passing through the coil is minimum, and two conditions where magnetic field lines passing through the coil is maximum, right. So this is, so or so this causes जनरेशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट, क्योंकि एवरी टाइम, मतलब विद द टाइम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज चेंजिंग, सो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही हैं, देन देयर इज इंड्यूस करंट इन द सर्किट, इंड्यूस ईएमएफ, क्योंकि ईएमएफ कॉज करता है करंट, तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और अगर ये रोटेट नहीं करेगा, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड इज नॉट चेंजिंग, then current will not flow, right. So you can say you know uh, magnet sorry rate of change of flux is directly proportional to induced emf, sorry, induced emf, ये induced emf, right, and induced emf generate induced current, right. So rate of change of magnetic flux is responsible for generation of emf, induced emf and current. If through a coil 2000 magnetic field lines are passing, matlab there is a strong magnetic field, but emf will not generate because there must be,
समय के साथ नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को चेंज होना जरूरी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज नहीं होंगी तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट नहीं होगा। ठीक है ना? यही प्रिंसिपल होता है जनरेटर का। दिस इज वी हैव जनरेटर। जनरेटर what it does, it converts mechanical energy electrical energy. Very nice. Mechanical energy to electrical energy, right? This is generator. This is, यही आपके टीचर ने आपको डिस्कस किया होगा। इंड्यूस मैग्नेटिज्म इसी को बोलते हैं, है ना? डू यू हैव ट्रांसफार्मर ऑल्सो? नो। अच्छा, ओके, एनीवे। ओके, है तो अच्छी बात है, नहीं है तो सुन लो। शुड आई रब दिस? दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, यू नो, दिस इतना बस याद रखोगे, योर टाइम क्लास 10th इज ओके। देखो, ट्रांसफार्मर व्हाट डज, एक चीज होती है, जैसे मान लो पहले तो आपने ये एक आयरन का ऐसा कॉइल लिया, ठीक है? ये आयरन का कॉइल है। ये हम लोग पूरा ब्लॉक नहीं लेंगे, ऑलवेज चिप्स में होता है, ठीक है? ये चिप्स में इसलिए होता है टू प्रिवेंट ईडी करेंट्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ईडी करंट को प्रिवेंट करने के लिए वी नेवर टेक ब्लॉक्स, वी विल यू नो पुट चिप्स को, मतलब ऐसे ऐसे, जैसे वैसे ना, ये आयरन का ऐसा एक चिप हुआ, इस तरह से इनको एक के ऊपर एक रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिससे कि ब्लॉक नहीं लेंगे कभी भी। अब इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो है, सपोज ये जो है, ये एसी सोर्स से जुड़ा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो क्या होता है कि ये, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, ठीक है? अब ये कॉइल है, ऐसे रोटेट करेगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, ठीक? ये हो गया। इसको बोलेंगे जो कॉइल, मतलब एंड विच इज attached to the AC source is known as primary coil. Primary coil. Fine. And this is we have. Oh, yeah. This is. Okay. Obviously, a coin has two faces, right? So it is secondary. Obviously, it is secondary. Like this. Yeah. This is attached to the. This is attached to the. Yes, secondary coil is attached to the consumption point. So consumption we show by this. So this is consumption point. This is called secondary coil. Secondary coil. Right? Secondary coil. When number of, ये क्या है? Number of turns in primary coil, NP, and this is number of turn in secondary coil. Right? So when number of turns in primary coil is greater than number of turns in secondary coil,
then it is called step down transformer. Step down is step down transformer, right? Step down transformer. And when number of turns in primary coil is less than number of turns in secondary coil, then it is called step up transformer. Step up transformer. Transformer, right? So transformer, what transformer is doing? Transformer, by changing the amplitude, alter the EMF, potential difference, right? Transformer, 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 by changing amplitude, amplitude, alter potential difference, potential difference, right? अभी this step down transformer, step down transformer decrease the potential difference, decrease potential difference, right? मतलब ये है कि जैसे आपने पढ़ा होगा, मतलब वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट जनरेशन पॉइंट पे जो हम लोग इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करते हैं वो शायद 11,000 किलो वोल्ट के ऊपर जनरेट करते हैं, ठीक है? जैसे जो आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होता है या जो भी न्यूक्लियर प्लांट है, तो वहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी इनिशियल पॉइंट पे जो हम जनरेट करते हैं, इनिशियल पॉइंट, तो वहां पे जो होता है वो शायद 11,000 किलो वोल्ट के ऊपर जनरेट की जाती है, ना इससे नीचे ना इससे ऊपर, टू प्रिवेंट द लॉस, राइट? उसके बाद हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा देते हैं, हम इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाते हैं और इसको लाते हैं 133 किलो वोल्ट के ऊपर, राइट? एंड हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज लेस, ठीक है? सो इसीलिए जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस पे होता है, 133 किलो वोल्ट के ऊपर होगा, ठीक है? और उसके बाद फिर हम इसको, फिर जहां पे हमें काम करना होगा तो इसको मान लो हमने 66 किलो वोल्ट के ऊपर ले आए, तो हमने 66 किलो वोल्ट के ऊपर ले आए तो हमने इसको हैवी इंडस्ट्रीज को भेज दिया, ठीक है? हैवी इंडस्ट्रीज को भेज दिया, फिर हैवी इंडस्ट्रीज से फिर इसको आगे बढ़ा दिया, फिर मान लो फिर ये आया तो फिर यहाँ पे हमने सब स्टेशन पे फिर यहाँ पे स्टेप डाउन ये स्टेप अप था, यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, यहाँ पे स्टेप डाउन, ठीक है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ने इसको, स्टेप अप ने इंक्रीज किया, मैं इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, इंक्रीज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? तो स्टेप अप यहाँ पे हमें डाउन करना है, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के हमने इसको 133 किलो वोल्ट से 66 किलो वोल्ट के ऊपर लाए और हैवी इंडस्ट्रीज को दे दिया और बाकी फर्दर आगे जाने दिया। फिर यहाँ पे हमने 33 किलो वोल्ट के ऊपर 33 किलो वोल्ट के ऊपर इसको ट्रांसफर किया और इसको लाइट इंडस्ट्री मतलब आगे जाने दिया और 33 किलो वोल्ट को हमने लाइट इंडस्ट्रीज को दे दिया और फिर इसको सिटी सब स्टेशन पे, जैसे ये 33 किलो वोल्ट है तो इसको सिटी सब स्टेशन पे लाके हमने यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे फिर हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर किया
और इसको फिर जो है 220 वोल्ट के ऊपर डोमेस्टिक सप्लाई में भेज दिया। तो यहां पे हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया, राइट, step down transformer. So this is happening. This is the functioning of transformer. Transformer, by changing the amplitude, alter the potential difference. Step up transformer, step up transformer increase potential difference, and step down transformer decrease the potential difference. Right. Huh. And energy transfer, electrical energy is transferred on high potential difference to prevent the loss of electrical energy in the form of heat. Is it? Did you understand? This much is, this much is, this data is correct, which is given in your book also. Household holding का जो तुम्हारा chapter होगा उसके front page पे लिखा हुआ है. So this data is correct, which I wrote here. Can you check it? Do you have book? Do you have book? ये डेटा जो मैंने लिखा है 11,000 किलो वोल्ट, ये तो मेरे को सही है, ये शायद मैंने गलत सही लिखा है। हाँ, फ्रंट पेज पे, ये फर्स्ट पेज पे। हाँ हाँ हाँ, आराम से आराम से। नहीं, फ्रंट पेज पे लिखा है 11 किलो वोल्ट, 11 11,000 किलो वोल्ट, मतलब सॉरी 11 किलो वोल्ट है ना, 11,000 किलो वोल्ट इज प्रीटी ऑड। या तो 11,000 वोल्ट लिखेंगे या 11,000 किलो वोल्ट लिखेंगे। यस मैन, 11, हाँ 11 किलो वोल्ट से मतलब 11 किलो वोल्ट, देन 133 किलो वोल्ट, then step down transformer लगा के 66 kilovolt and sent to heavy industries and remaining sent to 33 kilovolt, then it goes to 33 kilovolt ना, ये और भी कम है। अच्छा 133, अच्छा 133 किलो, 133 से इसको लाते हैं 33 किलो वोल्ट के ऊपर, और 33 किलो वोल्ट को हैवी इंडस्ट्रीज पे भेजा, एंड उसके बाद फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाया तो ये लाए 11 किलो वोल्ट के ऊपर। 11 किलो वोल्ट को हमने भेजा लाइट इंडस्ट्रीज को, एंड देन इट गोज टू सिटी सब स्टेशन। सिटी सब स्टेशन में ये सिटी सब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के 11 किलो वोल्ट को 220 किलो वोल्ट पे ले आए, तो 220 वोल्ट पे ले आए। ठीक है ना? This much is, now it is correct. Okay, so this much is electromagnetic induction. Okay, should I rub this? Okay, so now one more thing we have, not to this electromagnetic induction, but I would like to discuss about power. What is power? Power. What is power? Yeah, कोई बात नहीं। हाँ, power is work done, rate of work done, right? Yes, yes. I understand that power is rate of work done, W upon T, right? You have studied earlier that what is potential difference? V is equal to W upon Q. Am I correct? Yeah, not sure anyway. No need to be. I am correct. So now we will cross multiply it and we get W is equal to V into Q, right? This W is equal to V into Q. You put it here. P is equal to V upon Q into T, right?
I substituted this value in this equation, right? So this, what is this Q upon T? Charge flowing per second. What we call. I hope you will listen this. Yeah, it is called electric current. Q upon T is electric current. है ना? Yes. Thank you for revising me. V upon I. Right? So first concept is P is equal to V upon I. Right? P is equal to V upon I, but the power is potential difference into electric current. First formula is this, right? I hope you have heard about Ohm's law. Ohm's law. So what is Ohm's law? That is V is equal to IR, right? IR. Small में लिख लेते हैं. V is equal to IR. So substitute this value here. So it becomes IR into I. So we get I square R, right? So it means it is P. This is the second formula. This is the second formula, right? Yeah. And when we put, should I go further? Take your time. Take your time. हो गया? Oh, we are going very fast. Okay. So now we have. Now we can write it. Now we can write this Ohm's law. I is equal to V upon R. Bring this R in denominator, so I can be written as V upon R. So if I put P is equal to V upon V upon R. So it becomes P is equal to V square upon R. Getting? So in total we get, now we have a sequence of formula that we can say power is equal to VI or I square upon R or V square upon R, right? These are the three variations, right? Power can be written as V is equal to I is equal to I square upon R is equal to V square upon R. Okay, should I rub this? P is equal to V square upon R, right? Then we have P is equal to VI
is equal to I square upon, take it. Okay. Now you told me that P is equal to W upon T. So we can write W is equal to P into T, right? So when W is equal to P into T, so we can write here in place of P, P can be written as V into I. So it can be V I T, right? This is one formula we have with W. Another we can write in case that is I square R into T is equal to W, right? I square RT. This is W. And last one we have V square upon R into T is equal to W, right? This formula is used to find electrical energy. Usually, if somebody is asking you to find out electrical energy, then you use this formula. No doubt, as per the given data, you can use this also because the work is a kind of, so all are for electrical energy. But if someone asks to find out electrical energy, so you will go with this. If data is not like, if you are not having data like this, then you can use this also, you can use this also. Okay? Now I send you some questions. I hope you have with yourself. हाँ, मैं मिटा रहा हूँ इसको. There is a last question. We have 21st question, right? Yes, this is question number 21. What is that? Geyser is rated. Geyser is rated. Geyser is rated 1500 watt and 250 volt. 250 volt. 250 volt. Right? Now the geyser is conducted कनेक्टेड टू मेंस. कनेक्ट, ये रेटिंग मतलब आई होप आपने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखे होंगे तो उसके ऊपर ऐसे लिखा रहता है ना,
कि कितना, कितने वॉट का पावर क्या है, कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे इसको वर्क करना है ना। तो वही यहाँ पे लिख, ये गीजर पे मेंशन है, और इसको जो हमने जोड़ा, उसको जोड़ा, जो मेंस है उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज 220 volt. Fine. So we have to find the I. So you know the formula that P is equal to VI, right? So I is equal to P upon V. So P is how much? 1500 watt, and V is 220 volt. This is cancelled out. So how much? 150 upon 220, right? It will be divided by, oh sorry, sorry, I'm very sorry. This is 250 watt. In your book it is written mains का जो potential difference है 250 volt, ठीक है? So here we will take 250 volt. It is mentioned in your book. So there is no problem at all. 25 1 ja 25, 25 6 ja. So it current will flow of 6 ampere. Get it? और यार पूरा फार्मूला लिख के बता दिया, अभी भी थोड़ा थोड़ा है भगवान, बड़े माँ। चलो ठीक है, थोड़ा तो आया ना। अभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करेंगे, तो एनर्जी की बात करेंगे हम, तो एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू डब्लू, डब्लू, भगवान, एनर्जी इज इक्वल टू डब्लू इज इक्वल टू पी, पी सॉरी P into T. So we can write V into T. Oh, VI into T. Is it? Okay. So potential difference is of, and VI is equal to what? Okay. So how many watts? Okay, fine. So this is VI, potential difference is 250 volt into I is 6 into 50 hours, hour, 50 hour na, 50 hour, right? So this is 15 6 the 150, 15 6 the 150. So it is 1500 into 50 hour. So it becomes 15 5 the 75, 75,000 watt hour. Fine. So this can be written as 75,000 watt hour can be written as, this is turns into kilowatt, so 75 kilowatt hour. Fine. So this is 75 kilowatt hour, right? Oh. Now what next we have in this series? Okay.
नाउ इट इज आस्किंग कि कॉस्ट क्या होगा, है ना. दिस इज यूनिट. इट इज नोन एज किलो इन किलोवाट आवर. तो 75 कॉमर्शियल यूनिट. कॉमर्शियल यूनिट. Fine. So cost is equal to rate into unit. Rate into unit. So rate is 4 rupees 20 paisa. 4 rupees 20 paisa per unit into 75 units. 75 units. Right? Can you calculate this? Oh, Bhagwan. How much you will get? 75 table, I do not know. 75 into 420, 4 rupees 20 paisa. Right? 4 rupees 20 paisa. Yeah. This is rupees 315. Right? For 50 hours, its cost will be rupees 315. You get it? Okay. Take your time. Take your time.